So, hello students, this is Neeraj Kumar. Right now I am going to teach solution chapter of class 12th. Okay, so let us understand what is a solution. So basically chapter name is solution. Before we going to start solution, let's understand what is a mixture. So let's understand what is a mixture. So basically mixture क्या होता है कि mixture, okay, when we two or more things mixed together, then it is known as mixture. Okay, when two or more things mixed together is known as mixture. When two or more things or substances mixed together is known as mixture. Okay. For example, mixture of water plus sugar. Okay. Mixture of water plus salt and mixture of glucose or water, glucose C6H12O6 plus H2O, etc. These are known as mixture. There are two types of mixture. First one is the homogeneous mixture and second one is the heterogeneous mixture. Okay, so let's understand one by one what is a homogeneous mixture and what is a heterogeneous mixture. Okay, so let's understand mixture. Okay, mixtures are classified into two categories: homogeneous mixture and second one is the heterogeneous mixture. Okay, so in homogeneous mixture what is that कि a mixture of two or more components in which composition of components and physical and chemical properties are seen throughout the solution. Okay, so basically what it is a mixture of two or more components in which their composition
or composition comma physical and chemical properties are seen throughout the solution. Okay. Now let us understand. Okay. Before going to heterogeneous, let's understand some examples. And again, I am going to repeat it. It is a mixture of two or more components in which their composition, physical and chemical properties are seen throughout the solution. Okay. So let's shading an example. Now let's understand through the example. Let's mixture of sugar. What is the chemical formula of sugar? Basically, the chemical formula of sugar is C12H22O plus water. What is the molecular formula? Water is H2. So basically, mixture of C6H12O6. So we're taking a container. Okay. So we're taking a container. Okay. And here is a water. Okay. And in which here is a H2O, and in which we are going to add in C12H22O. Okay. So एक्चुअली होता क्या है कि जब हम शुगर को पानी में डालते हैं, शुगर को जब इस पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो शुगर के पार्टिकल्स है बताओ, इस कंटेनर में कंप्लीटली क्या होता है, शुगर रहता है एंड प्लस वाटर का मिक्सचर। तो जो मैंने होमोजेनियस मिक्सचर का जो डेफिनेशन दिया था क्या, कि ऐसा मिक्सचर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो कंपोनेंट है उसका कंपोजिशन और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होगा। कहने का मीनिंग क्या है, अगर मैं सिंपल यहाँ से बाहर निकालता हूँ तो हमें क्या मिलता हो, शुगर प्लस वाटर का ही कंपोजिशन। अगर मैं सिंपल को यहाँ से बाहर निकालूँ तो फिर भी क्या मिलता हो, शुगर प्लस हमें वाटर ही मिलेगा। आ रहा है बात समझ में? तो चाहे मैं सॉल्यूशन में कहीं से भी एक में डेटा को कलेक्ट करूँ, फिर भी हमें क्या मिलेगा बताओ, ये कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम मिलेगा। आया समझ में? सो इस तरह के सॉल्यूशंस को होमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं या फिर होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अब चलते हैं क्या, इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या ले लो, और भी एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या ले लो, शुगर हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज ले सकते हो, ग्लूकोज प्लस वाटर ले लो। और एग्जांपल हो सकते हैं बताओ, सॉल्ट प्लस वाटर, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। नाउ we are moving towards the heterogeneous mixture. Okay, so let's understand what is a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture क्या होता है एक्चुअली में, कि mixture of two or more components in which two or more is a mixture of two or more components in which the composition of the component
physical and chemical properties may or may not be same, or basically we can say are not same. So these type of mixture is known as heterogeneous mixture. So what is that? The mixture of all, the mixture of all two or more components in which their composition, physical and chemical properties, are not same throughout the solution. Okay. So these type of mixture is known as heterogeneous mixture. For example, water plus sand. So basically, heterogeneous mixture. An example is water plus sand. Another example is water plus clay. Okay. So let's understand it by example. Okay. So we have taken an example of water and sand. So let's understand it. Why it is known as a heterogeneous mixture. Okay. So basically, this is water present in a container. Okay. And in which we putting sand particles. Okay. So basically होता क्या है कि जब हम लोग सैंड को इस पानी में डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद होता क्या है कि ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, इसीलिए क्या बता दो, ये जो सैंड के पार्टिकल्स होगा, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे क्या ऐसे वीडियो बना लेता हूँ, जब इसको हम लोग डालते हैं इसमें क्या होता कि इनिशियली ऐसे घूमते रहेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं ये पानी है, सैंड के पार्टिकल तो ऐसे ढेर बना लेंगे। ओके। सो एक्चुअली होता क्या है कि देखो, अगर मैं सपोज यहाँ से डेटा को कलेक्ट करूँ तो क्या मिलेगा, बताओ, सैंड मिलेगा, और क्या मिलेगा, तो वाटर मिलेगा, और क्या मिलेगा बताओ, यहाँ से अगर मैं डेटा को कलेक्ट करता हूँ बताओ, सिंपली क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। सो एक्चुअली जब कंपोजिशन की बात करेंगे बताओ, देखो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें मिल रहा है, यहाँ पे केवल पानी मिल रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा बताओ कि दोनों चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। अगर सेम रहता होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता, अगर डिफरेंट है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। सो बेसिकली चलते क्या आ रही है
कि सॉल्यूशन में क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। सॉल्यूशन में क्या बता दो, एक तरह का क्या बताओ, मिक्सचर है। मिक्सचर ये सॉल्यूशन एक्चुअली कहते हैं किसको, देखो सॉल्यूशन किसको कहते हैं बताओ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन इज व्हाट, solution is what, it is a mixture of solute and solvent particles, the solvents. It is a mixture of solute and solvents is known as solution. Okay, so let's understand first what is solute and what is solvent. So here solute का बेसिक सा मीनिंग क्या है बताओ, सॉल्यूशन में जो चीज स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। A substance or a component, that present in a smaller quantity into the solution is known as solute. And similarly for solvents, what? For solvents, a substance or component that present in greater amount into the solution is known as solvent. A component or a substance or a component that present in greater amount into the solution is known as solvent. Okay, is known as solvent. And the mixture of solute and solvents is known as solution. Okay, so these are the basic important points we have understood. Now let's move towards what? Okay, now moving towards next, we are going to erasing these things. सो अब आगे बढ़ते हम लोग क्या, आगे बढ़ने से पहले क्या, देखो हमें और भी डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि होता है क्या होता है, इसके बाद हम जानते हैं क्या, देखो सॉल्यूशन चैप्टर में जनरली बताओ बहुत तरह के टाइप्स ऑफ, देयर आर 7 or 8 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी बुक। लेकिन जनरली क्या, हमें सॉल्यूशन चैप्टर में जनरली हमें 3 तरह के कॉम्बिनेशंस को हमें पढ़ना पड़ता है।
तीन तरह के कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना पड़ता है। पहला कौन सा कॉम्बिनेशन डालो, गैस इन लिक्विड, ओके, सेकेंड लिक्विड इन लिक्विड, एंड थर्ड सॉलिड्स solid in liquid. Okay. These are the three types of a solution we have studied in this chapter. Okay. So these are the definitions. So let's take an example. For example, gas and liquid example what? CO2 mixed in soft drink. Soft drink basically liquid component. Alcohol, for this alcohol and plus water, and for that sugar we can take sugar C12H22O11 plus H2O. So these are the basic type of examples we have studied. So these are CO2 and plus soft drink. These we have studied clearly in Henry's book. These are the applications because CO2 is compressed inside the soft drink. So these applications we have studied in Henry's law. Now moving next. Before moving to next, we have to remember some basic points. Some basic points. What? Let's understand concentration. What is a concentration? Concentration. There are many types of concentration term. But here I am going to discussing two types of concentration term. First one is the there are many definitions, but here I am going to discussing two definitions of a concentration. First, the moles of a solute. The moles of a solute present in per liter volume of solution is known as concentration. Okay. Now for this, C is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. So is the SI unit is what? Is I unit is mole per liter. Okay. Now here is another definition of concentration. What? The moles of solute present in per kg weight of solvent per kg weight of solvent is known as concentration. So according to this definition, C stands for concentration is equal to number of moles of solute divided by weight of solvent in kg. Okay. So here SI unit what? Mole per kg.
kg. Okay, mole per kg. So these are the basic definitions of concentration. Now in chemistry we see name like dilute HCl, dilute H2SO4, and like dilute HNO3 or concentrated HCl or concentrated H2SO4 or concentrated HNO3. So what is a dilute solution basically? What is a dilute solutions and what is a concentrated solutions? So these basic terms we have also studied in solution. So right now I'm going to discuss that. So let's understand basic. What is a dilute? What is a dilute solution? Dilute solution means what? ऐसा solution जिसमें amount of solute बहुत ही कम हो in comparison to amount of solvent. So basically what dilute solution is what? The amount of solute is very minimum, very minimum in comparison to amount of solvents. Here amount of solvent means what? क्या in comparison to volume of solvent, or weight of solvents. Okay. For example, let's suppose a solution weight suppose a solution is given बताओ एक solution दिया हुआ है कि क्या एक solution है जिसमें क्या होगा कि अगर बता दें मान लीजिए क्या है अगर मान लेते क्या है अगर 10% अगर HCl प्रेजेंट है तो 90% क्या प्रेजेंट है बताओ 90% होगा H2O। HCl क्या होगा ये थोड़ा सॉल्यूट है और ये क्या थोड़ा बताओ ये क्या थोड़ा सॉल्वेंट है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस के मतलब इस तरह कॉम्बिनेशंस के सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें क्या हो ये सॉल्वेंट का कंपैरिजन देखो कितना कम 1:9 की रेशियो में बताओ। तो इस तरह के सॉल्यूशन के कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहेंगे। अब लेते हैं क्या देखो बताओ concentrated solution concentrated solutions में क्या होता है कि basically the amount of solvent, so the amount of solute is larger or amount of solute is greater in comparison to amount of solvent. For example, मान लेते कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें
H2O है और क्या मान लेते हो HCl है, लेकिन ये कितना प्रेजेंट है बताओ, ये मान लेते बताओ 20 या फिर 30% अगर प्रेजेंट है तो ये कितना परसेंट है बताओ, 70% बात ये है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस क्या है बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्लास में और भी आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में होता क्या एक्चुअली बताओ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बताओ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। ओके, सो आज हम लोग क्या पढ़े बताओ, आज हम लोग पहले क्या पढ़े बताओ, देखो आज हम क्या स्टडी की बताओ कि मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है ये पढ़े, मिक्सचर पढ़े, ठीक है। और क्या बता दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर बता दो, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़े, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या बता दो हेट्रोजीनियस एंड बता दो होमोजीनियस पढ़े बता दो होमोजीनियस। और इसके बेसिक कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस